Hello students, welcome to NV Commerce Academy. Our today's topic is classical models of oligopoly. There are three main classical models of this market situation. Here in this video, I am discussing the first model. Name of the model is Cournet's model. This model is based on the assumption that output of the rival will remain constant. So, this model is given by a French economist named Augustin Cournet in 1838. He considers the case in which there are two sellers. So, it is a case of duopoly, but it is also applicable in oligopoly. So, first of all, we will discuss the assumptions of this model. First, there would be two firms and both the firms will own a mineral well where quality of water would be same. So here we will consider homogeneous products. Cost of production would be 0 for each firm. Next, number of buyers would be large. And each firm is aware of demand curve. Both the firms know that demand curve is a straight line demand curve. Next, each firm acts on the assumption that competitors will not change their outputs. Profit maximization would be the ultimate motive. And the last is price fixation would not be done by any of the firm. Price would be prevailing market price only. Each firm will sell the output at prevailing market price. So in this model, there are two firms, firm A and firm B, producing mineral water of same quality. Cost of production is 0 and firm wants to maximize the profit. As we know, if cost is 0, then profit would be equal to total revenue earned, and total revenue is maximized with a condition where marginal cost equates marginal revenue. So, for understanding this topic clearly, we will take help of a diagram. Here on x-axis there is output and on y-axis there is price. As we have assumed that each firm is aware of the straight line demand curve, so DD is the demand curve here. So first of all, marginal revenue of firm A. This is marginal revenue of firm A. As we know, equilibrium would be at point where marginal cost equates marginal revenue. So, marginal cost is 0, which means on x-axis there would be point where marginal cost and marginal revenue equates. After extending this line, we'll come to know that this firm would sell its product at price P. So, let's suppose firm A is first to start the production and total output is required 2000 units. When firm A will start the production, then it will choose the output level at its own, and by assuming that B will continue to produce nothing. So firm A would decide to produce 1000 units. So मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू इस पॉइंट पे इक्वेट कर रहा है. सो यहाँ पर ये फर्म 1000 यूनिट्स की प्रोडक्शन करेगी एट OP प्राइस वेयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी इक्वल टू
1. Now it's firm B's turn to start the production. So it will assume that the left out production means 2000 यूनिट में से A firm की जितनी भी production है left out units are 1000. So firm B will produce half of the quantity means 500 units. So marginal revenue of B firm, this is the equilibrium point and this is price. This firm will produce 500 units. CD portion of total market demand curve D. Because अब इस फर्म के लिए टोटल हमारी डिमांड कर्व थी इतनी, उस फर्म ने 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया, लेकिन इस फर्म के लिए अब डिमांड कर्व इतना ही है और इस डिमांड कर्व में उसने हाफ यूनिट्स को अगेन प्रोड्यूस किया 500 यूनिट्स. सो this system will continue in different rounds means now अगर हम B फर्म की आउटपुट की बात करें तो उस B फर्म ने 1/4 ऑफ टोटल यूनिट्स यानी कि 500 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया. तो नाउ अगेन इट इज ऑफ A फर्म्स टर्न. सो टोटल में से 1/4 की प्रोडक्शन B फर्म ने की है. सो रिमेनिंग इज 3/4. राइट. सो इस 3/4 का हाफ यानी कि 3/8. 3/8 ऑफ टोटल 2000 यूनिट दैट इज 750 units. Firm A will produce 750. Next turn again of B. अब इस फर्म ने 3/8 यूनिट की प्रोडक्शन की है तो फर्म B 3/8 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करके उसके हाफ की प्रोडक्शन करेगी. दैट वुड बी 625. दिस सिस्टम विल कंटिन्यू टू गो. सो फर्म A's output would be 1750, 687.5 till it reaches 1/3. And if we talk about B firm, then its output would be 500, 625 till it reaches its 1/3. So here we can see that firm A's output is declining whereas firm B's output is increasing. So output of each firm will be 1/3 of total market demand at a common price. This price is usually less than the monopoly price, but oligopoly price is higher than the perfect competition price. लेकिन अगर हम कॉर्नेट के एग्जाम्पल की बात करें जो कि ज़ीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर बेस्ड है, यहाँ परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी इसे ज़ीरो ही कंसीडर किया जाएगा. तो इन शॉर्ट अगर दोनों फर्म्स आपस में compete करती हैं तो इक्विलिब्रियम जो है वो 2/3 ऑफ टोटल आउटपुट पर बेस्ड होगा. राइट. बट अगर दोनों अग्रीमेंट कर लेती हैं तो दोनों ही फर्म्स जो हैं वो फ़ायदे में रहेंगी. इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग 1/3 दोनों ही हाफ की प्रोडक्शन कर सकती हैं और मोनोपोली प्राइस से थोड़े ज़्यादा प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकती हैं. हाउएवर क्रिटिसाइज़ किया जाता है इस मॉडल को क्योंकि क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाय कंपैटिटर तो हमने अज्यूम कर ली कि ये कांस्टेंट है, लेकिन राइवल्स में कंपटीशन हमेशा होता है अबाउट द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, जिससे प्राइस जो है वो कॉम्पिटिटिव लेवल से समहाउ क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है. तो यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो प्राइस है वो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ही रहेगा. इस ग्राउंड पे इस मॉडल को क्रिटिसाइज़ किया जाता है. So it is all about the Cournet model of oligopoly. Thank you.